अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दोस्ती और क्रिकेट। और आज पाक न्यूजीलैंड से जीतने के बाद, एक अमेजिंग मैच जीतने के बाद, हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं औजानुल हक, इमामुल हक के कज़न भी हैं, एंड ही इज़ अ क्रिकेटर हिमसेल्फ एंड ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो चलते हैं उनके पास एंड लेट्स सी व्हाट ही हैज़ टू से अबाउट टुडेज गेम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज का मैच देखा, मैं समझता हूँ आज का मैच बहुत अच्छा हुआ। जिस तरीके से हमारा स्टार्ट हुआ था, आई थिंक 401 वाज द बिग टारगेट फॉर अस, बट आई थिंक द वे फ़खर बैटेड अलॉन्ग साइड बाबर, मैं समझता हूँ बहुत मज़ा आया। मैं तो फुल रेडी था कि फ़खर क्या 200 देखने को मिलेगी, बट रेन हैड अदर प्लान्स। और लेकिन शुक्र है वी वर अहेड डीएलएस के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि उम्मीद है कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देगी इंशाल्लाह। वी बीट इंग्लैंड, और इंशाल्लाह हम इंडिया का सेमीफाइनल में मिलेंगे। Assalamu alaikum, everyone, and welcome back to another episode. Thank you so much, Azan, for joining us. Or let's get right into it. तो आज I think what a splendid performance by Pakistan. Although bowling थोड़ी weak थी और 400 का target दे दिया था उन लोगों ने, I think any other team in the world would have not been able to chase this down. तो पाकिस्तान ने बहुत effort दिखाई, बहुत fight दिखाई, and all down to one man, Fakhar Zaman. What an insane performance. तो guys, I just want to ask you कि अब क्या लगता है? अब लगता है कि फ़खर को ड्रॉप करना was a mistake after just 2 matches in the World Cup. क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, फ़खर को ड्रॉ अगर आप देखें, उसकी जो करंट फॉर्म थी एशिया कप से हम देखते हुए आए थे, बहुत ही आई थिंक बहुत ही गंदी फॉर्म में था। एंड देन उसको ड्रॉप करने के बाद भी गौर अब्दुल्ला शफीक हु आई थिंक परफॉर्म्ड रियली वेल अगेंस्ट श्रीलंका। तो उस वक्त तो हमें लग रहा था कि कि जो रिप्लेसमेंट आई है फ़खर जमान की जगह, वो बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट आई है। बट अगेन आई थिंक वी वर लैकिंग अ पावर हिटर इन द पावर प्ले। शुरू के 10 ओवरों में आई थिंक वी हैडंट हिट अ सिक्स सिंस आई थिंक 1200 बॉल और समथिंग। और फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है, वो इम्पैक्टफुल प्लेयर है, वो कभी भी अगर वो सेट हो जाए तो आई थिंक वो अलग वन साइड गेम अलग ले जाता है। बट जिस तरह की मेरे ख्याल मामला की फॉर्म चली थी, आई थिंक ही वॉज meant to be dropped, and फ़खर जमान also needed that much needed break जो उसको मिला। वो थोड़ा इंजर्ड भी था, सुनने में आ रहा था, बट द वे उसने जिस तरह उसने कम बैक किया, आई थिंक एब्सोल्युटली फिनोमिनल। और बहुत बहुत मज़ा आ रहा है उसकी जो 2 मैचों में जो उसने बैटिंग की, आई थिंक एब्सोल्युटली फिनोमिनल। हाँ बिल्कुल, फ़खर को जो ड्रॉप किया था उसमें ऐसा नहीं है कि फ़खर को रॉन्गफुली ड्रॉप किया या उसको ड्रॉप करके कोई गलती हो गई पाकिस्तान से या मैनेजमेंट ने सोचा नहीं। देयर वाज अ रीज़न ही वाज बीइंग ड्रॉप्ड। उसके आज के मैच से पहले आई थिंक 93 रन्स थे। उसने 2 मैचेस पहले खेले थे, तीसरा शायद अब खेला है या एक पहले खेला था। मतलब उसके रन्स नहीं थे वर्ल्ड कप में भी, उससे पहले एशिया कप में भी। तो एज अ बैट्समैन फ़खर पे काफ़ी रिलाय कर रहे थे हम कि वो अच्छे स्कोर बनाएगा, और अच्छे स्कोर बनाना ज़रूरी था क्योंकि आपको एक पावर हिटर से यही चाहिए कि वो पावर प्ले में स्कोर करे, और वो नहीं कर रहा था। तो एज ट्रेडिशनल पाकिस्तान थिंकिंग गोज, हमें था कि विकेट भी बचाए, अगर हिट नहीं कर रहा तो विकेट बचाए। ना विकेट बचा रहा था ना हिट कर रहा था, तो फिर हमने सही फैसला उस टाइम लिया था कि इमामुल हक को रखेंगे, अब्दुल्ला शफीक को लाएंगे, बिकॉज इमामुल हक 30-40 कुछ ना कुछ तो कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि फ़खर को गलत ड्रॉप किया था, फ़खर को सही ड्रॉप किया था, परफॉर्मेंस पे ड्रॉप किया था। बट यस, उसके बदले में इमामुल हक भी परफॉर्म नहीं कर रहा था अभी काफ़ी अरसे, काफ़ी मैचेस से, 3-4 मैचेस से, और विकेट चीपली दे रहा था। ही वाज गिविंग अवे हिज विकेट वेरी चीपली टू द ऑपोजिशन। तो आई गेस इट वाज राइटफुली बाबर मेड अ डिसीजन एंड ही वांटेड टू सी अ चेंज इन द ओपनिंग पार्टनरशिप, or really today it was required. No other batsman in Pakistan team, including Babar, can actually actually do this kind of onslaught against any team. 225 overs, there is no way Pakistan can do this without Fakhar, और इसीलिए उसको वापस लाया गया था, so you can utilize those power play overs. और 400 के डिफेंस में, even if we were 20 runs short, we know 3 sixes, a couple of sixes short, we were not gonna win this game. So really this whole match we won because of Fakhar, and I hope he continues his form, but he was rightfully dropped at the time. My daughter is going to be extremely mad when she finds out that I named her Fakhar Zaman. मतलब क्या sensational batting की आज. It was clean hitting. He was middling everything. It was his day. And I'm going to put my hands up and say कि I was the one who criticized him a lot, and I definitely owe him an apology. I was not familiar with his game. क्या sensational hitting की थी, unbelievable to watch. Or you see these types of innings barely. I think although इस World Cup में he's the fastest, his century was the 5th fastest, but ऐसा लग नहीं रहा था कि he was in the mode to slow down. वो 200 कर लेता. उसने बाद में कहा भी in his interview
कि eventually वो आराम से चेज़ कर लेते अगर फ़खर खड़ा होता. तो amazing batting. And just to reiterate one more point कि पता नहीं पाकिस्तान टीम कैसी है. जब भी हमें लगता है कि टूर्नामेंट से बाहर होने वाली होती है, वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं. If someone told me a week ago कि New Zealand would lose against South Africa by 190 runs, and then Pakistan will end up winning a match where the target is 402, I would not believe it. So guys, is this Qudrat Ka Nizam? Is it working? बिल्कुल मैं समझता हूँ कुदरत का निज़ाम इज एक्चुअली वेरी रियल थिंग. देखिए दो व्हेन वी लॉस्ट टू अफगानिस्तान मेरे पहला यही ख्याल था कि वी आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, देयर इज नो वे कि विल मेक अ कमबैक. बट जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने हमारी मदद की, द वे दे बी न्यूजीलैंड, आई थिंक वहाँ से फिर बहुत उम्मीदें जागी. एंड मेरी पूरी दुआ है कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दें, वी बीट इंग्लैंड कॉम्प्रहेंसिवली. एंड आई रियली विश टू सी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल इन कोलकाता. Yeah, I definitely agree. I do not know why Pakistan team has this habit. Why Pakistani team always does this to its fans, to the people watching, to Cricket World Cup fans. They always start late. They always lose the first 2-3 games. Then they make a comeback, and right on the cusp of either getting into the semifinals or the finals, they either get in or they go out on run rate. They have to leave it at the last moment. Every single game that you watch of Pakistan cricket, it's always going to go through the last ball, to the last over. It's always entertaining. मतलब इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है अपने फैंस को एंटरटेन करने का या पूरी दुनिया को एंटरटेन करने का कि सादा मैच हमने जीतना ही नहीं है. There is no way this team has won a match in which the target was 402 and lost games where they had to even score less than 300. There is no way. This is only one team that can do this, that has the polar opposites in the same team, and they can perform on both spectrums of performance. कि थोड़ा स्कोर होगा तो हार जाएंगे, ज़्यादा स्कोर होगा तो चेज भी कर लेंगे. You don't know, even Pakistan cricket team themselves don't know which Pakistan team is going to turn up on the day. So I think this predicting what Pakistan team is going to do is long gone. हम सबको ये लेसन हम हर साल करते हैं और हमें फिर भी सबक नहीं मिलता कि हम पाकिस्तान टीम को प्रिडिक्ट करते हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे. Really, there's no point. You should just watch them, enjoy while it lasts. अगर जीत रहे हैं तो खुश हो, हार रहे हैं तो दुआ करो कुदरत का निज़ाम हो जाए. That's it. There's no need to predict anything. I don't think any analysis works, any preview works. पाकिस्तान टीम अपनी मर्जी करती है. जो उनका दिल करेगा वो करेंगे, जो उनका उस दिन मूड होगा उस दिन वो करेंगे. तो पाकिस्तान टीम को प्रिडिक्ट करना फजूल है, I think. But yeah, moving on, I think we should talk about bowling. Again, we've been talking about it throughout the whole World Cup. फिर से we've conceded 400 runs. What do you guys think? देखिए मैं समझता हूँ कि नसीम शाह, आई थिंक आउट ऑफ, इन माय ओपिनियन मैं समझता हूँ नसीम शाह हमारा आउट ऑफ द लॉट जो है वो बहुत सबसे बेस्ट बॉलर है. जिस तरह का वो नया बॉल करता है और फिर जिस तरह वो बीच में आके और डेथ ओवर्स करता है, आई थिंक ही इज़ द मोस्ट कंप्लीट बॉलर दैट वी हैव. और मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट नसीम शाह हमारी बॉलिंग बहुत बुरी तरीके एक्सपोज हुई है इस पूरे वर्ल्ड कप में. मतलब कमिंग इनटू एशिया कप एंड वर्ल्ड कप, आई थिंक वी वर नोन मोर टुवर्ड्स बिकॉज ऑफ आर बॉलिंग रादर देन आर बैटिंग इन इट, कि हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है. बट सैडली जिस तरीके से हमारी बॉलिंग ने इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है, जिस तरीके से हम 300, 350, 400 रन आज हम खा गए हैं, आई थिंक आर बॉलिंग यूनिट डेफिनेटली नीड सम वर्क. और वी बैडली मिस नसीम शाह. आई मीन नसीम शाह की बहुत हमें कमी महसूस हो रही है इस पूरे वर्ल्ड कप में, और उम्मीद है कि वो जल्दी कम बैक करेगा इस टीम में. 100% agree with you, Azan. We are 100% missing Naseem Shah. मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा हुआ है कि he was the one who was putting pressure from the other end. वो tight line और length कराता था with pace, and was just the batsman who not able to hit him with the new ball. और उसकी वजह से pressure पड़ता है, and then Shaheen would come in and do more aggressive style bowling, जहाँ पर he would bowl at high pace, in swing, attacking the stumps, and उसके वजह से उसे wickets मिलती थी because the batsman would try to go hard to him because they were not able to play Naseem. तो पिछले एक साल से हम यही ट्रेंड देख रहे हैं, and as soon as we have lost Naseem, तो our Pakistani bowling has been exposed, and I think it's very worrisome. Pakistan bowling has always been the strength. हमें हमेशा हर टूर्नामेंट से पहले लगता था कि अगर bowling strong है तो हम मैचेस जीतेंगे, but for the first time हम देख रहे हैं कि यार हम एक्चुअली बैटिंग पे डिपेंड कर रहे हैं और बॉलिंग हमारी वो फायर नहीं कर रही.
एंड द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट आई थिंक सो फार इज़ हारिस रऊफ. वैसे मुझे पता नहीं कि क्या शौक है पाकिस्तान टीम को रिकॉर्ड्स बनाने का. आज तो हद ही कर दी. मतलब विद इन 10 मिनट्स 2 रिकॉर्ड्स बन गए. पहले हारिस रऊफ ने बनाया हाईएस्ट रन्स कंसीडर्ड बाय पाकिस्तानी बॉलर वर्ल्ड कप. उसके 10 मिनट बाद शाहीन अफरीदी ने वही रिकॉर्ड तोड़ दिया. इट्स एक्चुअली शेमफुल टू सी. पता नहीं क्या हो रहा है. इट्स जस्ट द सेम इश्यूज. आई थिंक इट्स सेम इश्यूज ऑफ इनकन्सिस्टेंसी. व्हेन यू आर बॉलिंग इन अ फ्लैट डेक जहाँ पर बॉल ज़्यादा मूव नहीं कर रही, आपको सीम मूवमेंट नहीं मिल रही, आपको स्विंग नहीं मिल रही, इस टाइप पिचेस पे आपको अपनी लाइन और लेंथ कंट्रोल करनी पड़ती है. 6 की 6 बॉल आपको एक जगह पे डालनी पड़ती है. अटैक टॉप ऑफ स्टंप, अटैक टॉप ऑफ फोर्थ स्टंप. अगर आप वो रखोगे, वही लाइन रखोगे, तो बैट्समैन खुद गलती करेगा. पर अगर आप 4 बॉल अच्छी करोगे, फिर एक वाइड बॉल दोगे या एक शॉर्ट बॉल दोगे, एक लेग साइड पे दोगे, तो आपको मार पड़ेगी. एंड यही गलती न्यूजीलैंड ने भी की. ट्रेंट बोल्ट वाज बॉलिंग टू वाइड इनिशियली एंड देन टिम साउदी वाज बॉलिंग टू मच टुवर्ड्स द बॉडी, और उसकी वजह से उनको रन्स पड़े. तो ऑन सच फ्लैट पिचेस देयर इज़ नो मार्जिन फॉर एरर. So I think this is the main issue. And yeah, I don't know how they're going to improve. Is it a matter of getting a better bowling coach, a more experienced bowling coach? I don't know. And hopefully, again, we see Naseem Shah soon back into the team, and hopefully he can be there for the Australia tour. Yeah, I think it's again ke one bowler Naseem Shah, he's not in the team. Just because of him, are we really, if we are vying for a World Cup win, we should not be reliant on one bowler too much. We should not be reliant on Naseem Shah so much that if he's not in the team, we're conceding 400, 387, 344. These are the 3 highest World Cup totals against us, and they've all come in the same World Cup. So, agar aap kisi bhi, if you look at any other team, India, you look at Mohammad Shami, he wasn't even in their squad 3 games ago. They have world class bowlers that can replace world class bowlers. That is the kind of team you need to have if you want to win a World Cup. You can't say that one bowler wasn't available, so we're all just gonna sit and we're all just gonna get thrashed. आप ये नहीं बोल सकते कि अगर एक बॉलर नहीं है तो हम तो खेलना ही छोड़ देंगे. आपको फिर भी अपना you have to give your all in the game, and you have to stop oppositions before 300, before 250 if you actually want to have a chance at the final. अब तो एक गेम रह गई है, so really all of this stuff is pretty much irrelevant. But really, if you get into the semifinals, if you get into the finals, and you're conceding 400s, हर रोज तो फखर जमान नहीं लपेटेगा opposition को. हर रोज तो 11 छक्के नहीं मारेगा. Yes, he's capable of this, but really you have to think that he's not going to perform every match. Just like before, that's why he was dropped. Not every player can play every single game. They have to be, the weaknesses have to be picked up by other players. तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैच में ये वीकनेस एक्सपोज होगी. आप हर मैच में इतना स्कोर नहीं कर सकते, आप हर मैच में इतने टोटल चेज भी नहीं कर पाओगे. तो आपको यू हैव टू अप योर गेम, यू हैव टू enhance your bowling, you have to work on yourselves, and you have to bring your A game if you want to beat someone in semi-final or someone in the final. You have to be better than this, I think. थोड़ी टैक्टिक्स के बारे में बात करते हैं. I want your opinion on the fact that Pakistan went for 4 fast bowlers for today's match, while New Zealand had a completely different approach. जहाँ पर उन्होंने इश सोदी जो उनका लेग स्पिनर है, उसको पहली दफ़ा मैच दिया इस टूर्नामेंट में. तो they went with 2 specialist spinners. Pakistan went with no specialist spinners and went with 4 fast bowlers. तो आप लोगों को क्या लगता है, was that the correct decision tactically and did it work in our favor? मैं समझता हूँ जिस तरह की हमारे स्पिनर्स इस पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग करते रहे हैं, स्पेशली द वे आप देखें शादाब, उसामा, नवाज, मतलब जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस इस पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, आई थिंक हसन अली वाज द बेटर चॉइस मैं समझता हूँ इस विकेट पे. और मैं समझता हूँ कि चाचा जो हमारा इफ्तिखार है, ही इज़ एक्चुअली बॉलिंग मच बेटर देन आवर स्पिनर्स जो हैं नवाज, शादाब. और डेफिनेटली कोई प्लान, कोई ना कोई थिंकिंग होगी हमारे टीम मैनेजमेंट कैप्टन की कि वाई दे वेंट फॉर 4 पेसेस एंड वाई दे ओनली आर 1 पार्ट टाइम स्पिनर. और न्यूजीलैंड की भी कोई थिंकिंग होगी, बट जो हमारा प्लान था कि हमारा प्लान ये था कि रिस्ट्रिक्ट देम अंडर गुड टोटल, जो हम चेज कर लेंगे, दैट डेफिनेटली डिडंट वर्क आउट. और बिल्कुल मैं समझता हूँ टीम मैनेजमेंट और इन सबको बैठ के सोचना पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से कि किस तरह इस आगे वर्ल्ड कप में, आई मीन वी ओनली गॉट 1 मैच लेफ्ट, बट मैं समझता हूँ उसके लिए भी काफ़ी थिंकिंग करनी पड़ेगी इनको. I think I agree that really अगर हम अपनी बॉलिंग देखें तो it was a good decision to bring in 4 pacers. अगर आज वो नहीं चले, really इससे पहले आपने अपने स्पिनर्स को देखा है, they have not performed at all. They've not been up to the mark, they've not been bowling well.
They've not been performing with contributing with the bat. None of the all-rounders. So I think it was a good decision to go in with 4 pacers. But really, I don't really think it worked because you ended up conceding 400. But at the end of the day, really, if you look at New Zealand, they went with specialist spinners. और स्पिनर्स की धुलाई हुई है सबसे ज्यादा. रियली स्पिनर्स को जो मारा है फखर ने, बाबर ने, उन्होंने स्पिनर्स को ही मारा है सबसे ज्यादा. तो रियली आई डोंट थिंक ईदर ऑफ देम वर्कड. बट वसीम जूनियर को अगर आज ड्रॉप कर देते, जिसने 3 विकेटें ली हैं, अगर हम उसको ड्रॉप कर देते तो वही प्रॉब्लम भी हो सकती थी. रियली इन हसन अलीज फेवर या इन सम अदर बॉलर्स फेवर, इफ यू ड्रॉप वसीम जूनियर जस्ट टू मेक रूम फॉर अनदर स्पिनर, दैट वुड हैव बीन डिजास्ट्रस. आई थिंक 402 की जगह 450 चेस कर रहे होते हम शायद, और शायद फिर डीएलएस का स्कोर पूरा नहीं होता. सो आई रियली थिंक के दोनों की स्ट्रैटेजी चली नहीं, रियली बिकॉज बॉलर्स वेंट फॉर रन्स. पिच ही ऐसी है, वर्ल्ड कप ही ऐसा है, रियली द गेम इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ बैट्समैन ओरिएंटेड गेम. तो रियली बॉलर्स हैव टू बी रेडी. बट आई थिंक इट डिडंट वर्क फॉर ईदर ऑफ देम. स्ट्रैटेजी वाज रियली यूजलेस. इट वाज जस्ट दोनों तरफ से मार पड़ी है बॉलर्स को. और रियली इन द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे इट वाज फखर हु वॉन द गेम फॉर अस. कहा है कि बॉलिंग के बारे में मैं समझता हूँ जितनी फ्लैट विकेटें हैं, द डिसीजन जो मुझे लग रहा है कि 4 पेसर्स का ये होगा कि कि लाइन लेंथ, अगर लाइन लेंथ पे आप बॉल करे तो आप रन्स कम देंगे, क्योंकि जितना फ्लैट ट्रैक है स्पिनर्स को इतनी हेल्प नहीं मिल रही. जैसे हमने देखा सैडनर और उन्होंने और अपने पार्ट टाइम स्पिनर ट्राई किए, लेकिन फखर ने किसी को भी नहीं छोड़ा. तो आई थिंक इसलिए यही था कि चाहे अगर लाइन और लेंथ हमारे पेसर्स अपनी सही रखें तो वो थोड़ा और टारगेट कम हो सकता था. बट अगेन इट डिडंट वर्क आउट फॉर नीदर न्यूजीलैंड नॉर पाकिस्तान. या आई एग्री विद यू बोथ. दोनों की स्ट्रैटेजी नहीं चली बॉलिंग वाइज, बिकॉज इतने रन्स पड़ गए थे. आई मीन कितने ओवर्स हुए थे टोटल? 75 ओवर्स हमने देखे और उसमें से 600 रन पड़े. दैट इज़ इनक्रेडिबल. तो रिगार्डलेस ऑफ द बॉलिंग चॉइसेस, वो पिच ही ऐसी थी जहाँ पर रन बनने थे. आई थिंक पाकिस्तान वर लाइक स्लाइटली बेटर इन दैट सेंस, बिकॉज स्पिनर्स की तो बिल्कुल धुलाई हो रही थी. फ़खर जमान ने इस मैच में 11 छक्के मारे एंड अपने 3 मैचेस से खेलें इस टूर्नामेंट में. 3 इनिंग्स जो खेली इस टूर्नामेंट में, उसमें से उसके आई थिंक 20 छक्के. दैट इज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस बाय एनी प्लेयर इन द टूर्नामेंट सो फार. तो दैट इज़ ऑल्सो इनक्रेडिबल टू सी स्पिनर्स की सही धुलाई हुई. सो आई एम काइंड ऑफ हैप्पी कि वी डिड नॉट गो विद नवाज और शादाब और उसामा मीर, बिकॉज वैसे भी वो पोर फॉर्म में, वैसे भी उनकी डिसिप्लिन नहीं है बॉलिंग में आजकल, तो उनको तो और रन पड़ते, प्रॉब्ली मोर देन हसन अली. So I think overall it worked well for Pakistan. Anyways, moving on, I want to just speak about Imamul Haq while we're at it. So I know Ozan, he's your first cousin, but I want your genuine opinion. What do you think is going wrong? Is he just out of form, or what is happening? Because वो पुराना Imamul Haq हमें नज़र नहीं आ रहा जो average 60 plus करता था before this tournament. But suddenly his average has come down and he's not in his full flow of batting. तो क्या लगता है? मैं तो खुद बहुत मिस कर रहा हूँ कि अपने पुराना इमाम की बैटिंग में देखूँ. सही है, बट आई थिंक मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट फॉर्म, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो उससे खेला नहीं जा रहा. ही इज़ लुक्ड गुड. अगर आप जितनी भी उसकी इनिंग्स देखें आप उसमें देखें कि ही इज़ लुक्ड लाइक इज़ इन कंट्रोल. जिस तरह वो स्टार्ट करता है, वो चौके मारता है, ड्राइव द वे ही वाज बैटिंग, आई थॉट ही लुक्ड गुड, बट ही जस्ट कुडंट कन्वर्ट दो स्टार्ट्स इनटू अ बिग स्कोर. आप अगर जैसे देखें साथ इंडिया के खिलाफ भी उसने स्टार्ट अच्छा किया सिराज से, 3 चौके मारी, ही लुक्ड गुड 36. बट देन नाउ आई थिंक काला जादू की वजह से वो आउट हो गया. फिर उसका जो एक और बड़ा मसला रहा है शॉर्ट बॉल का, मतलब उसको मैं समझता हूँ कि उसको उस पर काम करने की ज़रूरत है. शॉर्ट बॉल पे जो आप टीम ले आए, नैदरलैंड्स ले आए, श्रीलंका ले आए, हर टीम ने उसको उस शॉर्ट बॉल पर टारगेट किया और उसने अपनी विकेट उस तरह दी है. तो मैं समझता हूँ कि मतलब वो अपनी विकेट खुद दे रहा है. ऐसा नहीं हो रहा कि वो आउट हो रहा है, वो अपनी विकेट खुद दिए जा रहा है बड़े अजीब तरीक़ों से. मतलब जिस तरह का वो स्टार्ट करता है हर मैच में, मुझे यही लग रहा था कि आज इसने अच्छा स्टार्ट लिया है, ये चौके, मतलब ही इज़ लुकिंग इन गुड फॉर्म, बट ही इज़ नॉट एबल टू कन्वर्ट दो स्टार्ट्स इनटू अ बिग स्कोर. सो आई थिंक ही जस्ट नीड्स अ बिट ऑफ मोर प्रैक्टिस. जैसे फ़खर जमान को मैं समझता हूँ हमने ड्रॉप किया और जिस तरह का हमने उसको देखा कि द वे ही इज़ मेड अ कमबैक, आई थिंक इमाम के लिए भी दिस माइट बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि उसको ड्रॉप करें एंड देन गिव हिम अनदर चांस आफ्टर द वर्ल्ड कप, समथिंग वी माइट बी एबल टू सी द ओल्ड इमाम दैट वी आर यूज्ड टू सीइंग. हाँ, मतलब आई 100% एग्री विद यू. और ये सिर्फ इमाम का इशू नहीं है कि वो अच्छी स्टार्ट लेकर आउट हो जाता है. ये हमने बेसिकली एवरी बैट्समैन ने वही देखा है इस टूर्नामेंट में स्पेशली, कि पहले के 5-6-7 ओवर वो सेटल हो जाते हैं, थोड़े अच्छे स्टार्ट्स भी मिलते हैं, बाउंड्रीज भी मारते हैं, दे गेट गुड 20-30 रन्स, उसके बाद अपनी विकेट चीपली दे देते हैं. ये इशू हमने बाबर आजम
में भी देखा है, इमाम में भी देखा है, साउथ शकील ने भी यही किया हुआ है, रिजवान सेम थिंग. तो दे आर गेटिंग गुड स्टार्ट्स बट दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट देम इनटू बिग स्कोर्स. और आई थिंक रमीज़ राजा ने कहा था आई थिंक अ कपल ऑफ डेज अगो कि जो भी प्लेयर है अगर वो 50 करे उसके बाद आफ्टर फ्यू इनिंग्स वो उसको 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, यू शुड ड्रॉप हिम इमीडिएटली. तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है? डू यू थिंक ही सेइंग द राइट थिंग कि एक दफ़ा एक प्लेयर ने 50 कर ली है, वो सेट है, उसने काफ़ी बॉल्स भी यूज़ अप कर लिए हैं और ऑलरेडी 50 रन बना लिए हैं, इज़ इट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वर्ट दैट इनटू अ बिग स्कोर? और अगर वो नहीं कर पाता, फॉर एग्जांपल 55-60 पे आउट हो जाता है, शुड ही बी ड्रॉप? मैं समझता हूँ फिर हमें रमीज़ राजा से ही पूछना चाहिए कि प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए. अगर हम सभी प्लेयर जो हमारे प्लेयर है वो सब 50 करके आउट हो रहे हैं, इससे तो फिर हमारी सारी टीम ही ड्रॉप करने का हो जाएगा. बाबर आजम ड्रॉप हो जाएगा, अब्दुल्ला शफीक वुड बी ड्रॉप, इमाम विच इज ऑलरेडी ड्रॉप, सऊद शकील, तो सब ड्रॉप हो जाएंगे. पर खेलेगा कौन? वर्ल्ड कप के अभी भी कुछ मैच है, तो फिर खेलेगा कौन वर्ल्ड कप? हाँ, आई थिंक टेक्निकली तो इट वॉन्ट बी फेयर, और ये ऐसी दिस डज नॉट मेक एनी सेंस दैट यू ड्रॉप प्लेयर्स just because they're scoring 50s and they're not converting. 50 in itself is a really good score, but it depends कि आप किस सिचुएशन में 50 कर रहे हो, क्या चेज करते हुए 50 कर रहे हो, आप उस 50 का कोई फायदा भी हो रहा है टीम को, नहीं हो रहा. Really, आज बाबर ने he was taking time, he was anchoring the innings, he scored a 50, he scored 60 something of 60 something deliveries. I think his strike rate was 105 when the match ended, but technically that helped the team. Strike rate इतना ज़्यादा नहीं था. Fakhar was striking at 150 plus, but he was not striking at 150. He still scored a 50. He didn't score that much runs. Yeah, he didn't score that fast. But ultimately, he was doing a job. He was doing it according to the situation. तो अल्टीमेटली उस 50 का फायदा है. बट अगर आप यही 50 कर रहे हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपने कुछ चेज नहीं करना है, आपने टारगेट सेट करना है और आपको पता है पीछे 9 विकेट्स हैं, पर आप 60 ऑफ 60 कर रहे हो, पिच भी टफ नहीं है, इट्स अ बैटिंग पैराडाइज, बट यू स्टिल स्कोर 50 ऑफ 60, then it doesn't make any sense. Then you're really playing for yourself, you're not playing for the team. तो आपको then you have to look at yourself and you have to see if you're playing for yourself or the team. So this does not make any sense, but yeah, I guess you have to see what conditions there are, what situation they're in. And one more thing I'd like to add is I don't understand Pakistan's coaching setup and I don't understand Pakistan's team management. Really हमें कुछ पता नहीं है what and which coach and which player is supposed to do what job. कुछ मैच पहले हमने देखा, we were chasing a big total and our management sent Iftikhar over Saud when Iftikhar was supposed to play the pacers and Saud was supposed to play the spinners. If we had done it the other way around, Saud would have been able to nullify the spinners and Iftikhar could have come in late and actually scored some good runs. But kuch pata nahi hai. There are big names in the world, Andy Flower, Justin Langer, and these are people that have a lot of experience on their hands. They have good cricketing minds. You need people like this in your setup. You need people like Matthew Hayden teaching you batting. There should be batting technicians. These are people that can teach you the technique. They can teach you how to be better in certain conditions. Sean Tate tha hamare paas. Our bowling was improving. We were doing really well. I think Naseem Shah's excellence has something to do with Sean Tate as well. He was coaching the team when he came in. And you have to give credit to these players that are actually world-renowned good players. Mickey Arthur is your director or whatever. He's supposed to be your online coach. It's a joke. It doesn't make any sense because he has no CV. He has no resume. He has won nothing except the Champions Trophy in any part of the world, and yet we keep going back to him. So I do not understand what team management and what coaching setup we have, but we really need to look past it, and we really need to be right next to the world and be on par with all the other cricketing nations in the world. आई थिंक हमारी टीम मैनेजमेंट वही फॉलो करनी चाहिए, जैसे वही सौ मैक्सवेल जिस तरह आके मैक्सवेल ने 100 की थी, तो आई थिंक हमारे प्लेयरों में भी आया था कि हमारे इफ्तिखार चाचा कुड बी द नेक्स्ट मैक्सवेल. आई थिंक दैट वाज द रीजन व्हाई दे सेंट हिम आफ्टर 15 ओवर्स. बट ऐसे ना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आई डिडंट सी एनी पॉइंट ऑफ इफ्तिखार कम इन टू बैट ओवर सऊद शकील, जबकि वी ऑल नो इफ्तिखार प्रेफर स्पेस ओवर स्पिन एंड वी कुड क्लियरली सी दैट वो स्ट्रगल कर रहा था स्पिन के खिलाफ. तो आई थिंक अगर सऊद शकील आता और स्पिन वहाँ पे, क्योंकि वी ऑल नो सऊद शकील इज़ अ वेरी गुड प्लेयर स्पिन, मैं समझता हूँ कि वो आराम से स्पिन में रन करता, स्ट्राइक रोटेट करता. आई थिंक वी कुड हैव इजीली स्कोर्ड अबव 300 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो हम आई थिंक 280 समथिंग पे हम आकर रुके थे. तो यही जो कुछ मैनेजमेंट एरर्स है, आई थिंक दे नीड टू बी लुक्ड एट अगेन एंड अगेन कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं. बिकॉज हमें अपनी हम दूसरों की, मैं समझता हूँ हम दूसरों को देखते हैं फिर हम वो अपनी चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं
कि यार अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर रहे, वी नीड टू स्टिक टू आवर स्ट्रेंथ्स, और फिर हम उस पर उस कुछ चीज़ को देखते हुए हमें अपना प्लान करना चाहिए कि अच्छा यार अगर ये सिचुएशन है तो इस बैट्समैन को जाना चाहिए, ये सिचुएशन है तो ये खेले। सही है, क्लियरली जो इफ्तिखार को उन्होंने भेज दिया साउथ अफ्रीका में स्पिनर्स के खिलाफ, वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, और उस स्ट्रगल के चक्कर में जब उस पर प्रेशर आया वो शॉट मारने का, और वो आउट हो गया। साउथ शकील को हमने इतना नीचे भेजा कि बेचारा वो, उसको भी क्योंकि वो टाइम लगता है खेलने में। सो आई थिंक दीज एरर्स हैव डेफिनेटली कॉस्टेड अस अ लॉट इन दिस वर्ल्ड कप। देखें, प्लेयर्स का काम ये होता है जस्ट टू वर्क ऑन देयर टैलेंट, टू वर्क ऑन देयर स्किल सेट्स एंड इम्प्रूविंग देयर स्किल सेट्स। इनका काम ये होता है, दे आर नॉट सपोज टू create matchups ke which bowler they're not it's not their job to do the research. Doing the research and preparing the tactics is the responsibility of the team management, आपके coaches, आपके analysts, आपके statisticians. मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि there is some incompetency there. हर बड़ी टीम जो है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इनकी सबसे अच्छी बात है कि वो लोग रिसर्च करके आते हैं कि कौन सा प्लेयर किस टाइप ऑफ बॉलर से स्ट्रगल करता है। और पाकिस्तान आई डोंट थिंक कम्स वेल प्रिपेयर्ड, बिकॉज वो लैक ऑफ टैक्टिक्स नज़र आते हैं फील्ड में। जैसे आज डैरन मिचेल जब बैटिंग कर रहा था, सबको पता है कि डैरन मिचेल ट्राइज टू एंड प्लेज वेल डाउन द ग्राउंड। जब आपके लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ नहीं हो, दोनों मिड ऑन मिड ऑफ पे खड़े होते हैं फील्डर्स, तो जब पीछे फील्ड एम्प्टी होती है तो डैरन मिचेल गोज़ वेल, ट्राइज टू अटैक ओवर द फील्ड। और यूजुअली आप देखो कि एटलीस्ट जो दूसरे टीम्स करते हैं वो डैरन मिचेल के अगेंस्ट एक लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ रखते हैं, बिकॉज दे नो वो डैरन मिचेल की स्ट्रेंथ है एंड दे हैव टू नलिफाई दैट। पर आज हमें वो दिखाई नहीं दिया। सो आई थिंक दैट वाज अ लैक ऑफ टैक्टिक्स। प्लेयर्स की जॉब नहीं है टू नो, कैप्टन की जॉब नहीं है टू नो द वीकनेस एंड द स्ट्रैटेजी ऑफ द अदर टीम। इट इज़ द कोचिंग स्टाफ एंड द एनालिस्ट की जॉब जो ये काम करते हैं और मैचअप्स बनाते हैं कि किस प्लेयर के, किस बैट्समैन को कौन सी बॉलिंग लगवानी है। तो इस पे आई थिंक थोड़ा काम करना चाहिए। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा डेटा करती है, तो शादाब खान आपका वाइस कैप्टन है, प्लीज़ वो डेटा आप हमारी PCT में भी लाएं ताकि हम भी इम्प्रूवमेंट देखें। तो आई डोंट नो, एंड क्या कहते हैं, जस्ट टू टॉक मोर अबाउट एसेंस पॉइंट अबाउट द कोचिंग कैन नेवर इम्प्रूव if your top management is unstable itself. हर साल हम देखते हैं चेयरमैनशिप में कोई चेंजेस आते हैं। रमीज़ राजा आया, नो एक्चुअली लेट्स स्टार्ट विद, उससे पहले जब वसीम खान और एहसन मानी थे वो कपल ऑफ ईयर्स रहे, फिर रमीज़ राजा आया, वो 1-2 साल रहा, उसके बाद नजम सेठी, उसके बाद ज़का अशरफ। अगर आप हर साल अपने मैनेजमेंट बदलोगे, ऑब्वियसली वो अफेक्ट आएगा परफॉर्मेंसेज में, बिकॉज जब नई टीम मैनेजमेंट आती है तो नए कोचिंग स्टाफ भी आते हैं। They bring the people they like, they bring the medical doctors they like they bring the coaches they like, उसकी वजह से players को impact होता है। तो ये भी इनको fix करना पड़ेगा। They have to fix the political situation within the governing system, तभी टीम में improvement आएगी, तभी अच्छे coaches attract होंगे to work for PCB। Justin Langer, Andy Flower क्यों नहीं आते पाकिस्तान? Why do they prefer IPL contracts instead? Is purely because they know कि ये PCB is so unstable itself कि हमारी जॉब कभी भी जा सकती है। कौन आएगा आपसे काम करने के लिए? कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, और वो मतलब कोई प्रॉपर चांस नहीं देंगे टू इम्प्रूव द टीम। अभी रिसेंटली इंजमाम उल हक has also resigned over some really conflict of interest drama which should not be publicized. तो it's a really mess in the system, and इस mess की वजह से पाकिस्तान टीम अफेक्ट हो रही है। I don't know how to improve it. What is your opinion, guys? Should we leave it in the hands of 2 or 3 people who make the decisions? Should the political parties, the leaders of the country decide who the chairman will be, or should it be the fans and the experts of the आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हम फॉलो करते हुए आए, देखें पहले एहसान मानी थे और वसीम खान, आई थिंक दे आल्सो डिड अ ट्रेमेंडस जॉब। जिस तरीके से हमारी सारी टीम्स आई हैं हमारे पाकिस्तान में, आई थिंक दे हैड अ मेजर रोल टू प्ले इन दैट। बट जो हमारे बोर्ड में सबसे बड़ा मसला ये कि हमारी अनसर्टेनिटी बहुत है। यू नेवर नो कि आज आप बोर्ड PCB के चेयरमैन है, नेक्स्ट डे यू नो यू आर गोइंग टू बी फायर्ड। अगर आप देखें रमीज़ राजा को भी इसी तरह एकदम से निकाल दिया था। नजम सेठी रातों रात, आई थिंक अराउंड 2 AM ही ट्वीटेड दैट यू नो ही वोंट बी द चेयरमैन एनी मोर, एंड देन ज़का अशरफ केम। फिर जैसे आप देख रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू बहुत आ रहा था, और जो अभी रिसेंट मसले चल रहे हैं कि बाबर आजम की चैट लीक हो गई एंड देन इंजमाम उल हक रिजाइन, और जो भी मसला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इन द मिडल ऑफ अ वर्ल्ड कप, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी होना चाहिए। आपकी टीम वहाँ पे खेल रही है, यू नो, इंस्टेड ऑफ इनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग देम, आप सारे मसले उनके खिलाफ निकाल रहे हैं। यू नो,
तो आप अपने प्लेयरों को डिस्करेज कर रहे हो, तो अगर आपके अपने प्लेयर डिस्करेज हो रहे हैं तो हाउ वुड फॉरेन कोचेज बी इंटरेस्टेड टू वर्क फॉर यू? मतलब जैसे जस्टिन लैंगर हो गया, ये बड़े बड़े कोच दे प्रेफर आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स क्योंकि उनको पता है कि एटलीस्ट यू नो देयर जॉब इज सिक्योर। यहाँ पे आई डोंट थिंक हमारे पीसीबी के उसमें कोई भी सिक्योर है। आज आप पीसीबी चेयरमैन हैं, कल आप पीसीबी चेयरमैन नहीं होंगे, और फिर कोई और आ जाएगा। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, जो इस तरीके से मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। मैं क्योंकि जितना मुझे आइडिया, आई थिंक जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, आई थिंक ही वो करता है कि पीसीबी चेयरमैन कौन होगा, बट देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी और इतने कॉन्फ्लिक्ट हैं विद इन द बोर्ड जो डेफिनेटली डू हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर प्लेयर्स, जिसकी वजह से यू नो कि वी कैन सी द परफॉर्मेंसेज आर गोइंग डाउन। तो आई थिंक इन चीज़ों को काम करना चाहिए एंड आई एग्री फॉरेन कोचेज हमारे पास आने चाहिए क्योंकि वो अटैकिंग माइंडसेट लेकर आते हैं जो हमें बड़ी ज़रूरत है हमारी टीम में। I just want to make a point here. हम बिल्कुल अगर डिसीजन मेकिंग सिस्टम इम्प्रूव कर दें, एक मेरिट बेस्ड सिस्टम जहाँ पर पीसीबी के जो चेयरमैन होंगे उस बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे वो सेलेक्ट हों और पॉलिटिक्स के हिसाब से ना हो, तो बेहतर होगा. आई थिंक दैट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. बट आई वांट टू आस्क यू बोथ, इंग्लैंड की जो मैनेजमेंट है अभी, where they've also recently, I think a year ago, changed their board members, their head coach, their director of cricket, everything has changed. Even the person heading the committee, I think their chairman has also changed. और वो I think merit based पे आए. England is known for their systematic approach and a fair selection of the management. तो उनके केस में क्या हो रहा है? उनकी तो बोर्ड मेंबर स्ट्रॉन्ग है, उनकी तो मैनेजमेंट सिलेक्शन प्रोसेसेस आर फेयर और ट्रांसपेरेंट एंड देर वेल नोन टू द पब्लिक. तो उनकी क्यों परफॉर्मेंस इतनी बुरी रही है इस टूर्नामेंट में? ये ना हो कि पाकिस्तान टीम वर्क सो हार्ड टुवर्ड्स फिक्सिंग द पीसीबी सेटअप एंड हम यही परफॉर्मेंसेस देखें. सो व्हाट इज़ द मैचअप? क्या लगता है? इज इट रियली द पीसीबी दैट्स द इशू? Because England's performance defies that rule. Yes, I think PCB is the issue. Talking about politics in cricket, in terms of that, I think recently what has happened is, I think I've not seen a cricketing board act in such childish, immature, and unprofessional way ever in my life. Your captain has lost 4 games in a row. Your team has lost 4 games in a row. They're still in the World Cup. They have 3 games to play, and you put out a statement saying, इनको वापस आने दो, हम लेंगे डिसीजन. Let them come back and don't worry. We're gonna see what we want to do. Really, you've thrown them under the bus. You've made Babar the scapegoat. You've publicly said that Babar and Inzamam were the ones that chose the team. So really, don't blame us. We should not be the ones that should be taking the blame. If you have any hate, if you have any criticism directed those two, really, as a board, that is disgusting behavior. You have to own up. You have to say that, you know what, don't worry, it doesn't matter who picked the team. You don't even have to address that. I don't understand why that issue was even addressed. No one is asking you who picked the team. No one is coming to you for any clearances or any asking you why you let this happen or why did you make this happen. No one is coming to you for anything. You have to just back the team, say the team is not performing good, we know, but at this time, as fans, you should support the team. We are behind the team. Let's push in these last 3 games and go for it. Then on live television, the chairman leaks the private chat of your captain. Really, I don't understand if anyone's ever done this before on such a big scale. You're the chairman of a cricketing board, the biggest sport in the country, and you're doing this kind of stupid stuff that, you know, really university students do. ये हम यूनिवर्सिटी में देखते थे कि एक दूसरे की चैट्स किसी को पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं कि फलां ने फलां को ये मैसेज किया है, देखो जी मैं तो सही हूँ, मैं तो अच्छा बंदा हूँ, रियली मेरे पे ना इल्ज़ाम लगाओ. रियली डजंट मेक एनी सेंस. एंड तो आपको अपने कैप्टन को बैक करना, आपने बता दिया दुनिया को वापस आने दो जरा, इसको तो हम करते हैं ना सीधा, इसको तो कैप्टनसी से हम उतारेंगे, आप टेंशन नहीं लो, फैंस आप खुश रहो. डजंट मेक एनी सेंस. तो और दूसरा ये कि इंग्लैंड वाली बात, आई एग्री, देयर सेटअप प्रॉब्ली डिडंट वर्क, दे हैवंट परफॉर्मड वेल. But really, it's one in a million thing, or you know, once blue moon kind of thing. They've changed their test setup as well, and they're performing exceptionally well. So kabhi chalta hai, kabhi nahi chalta, but at least you're trying to improve, you're going forward, you're trying to do new things, you're keeping up with the cricketing world. ऐसा नहीं है कि आप अब अगर ये मिकी आर्थर को ड्रॉप करेंगे, I know for a fact कि Zaka Ashraf या other PCB chairman या whoever comes in, their thinking will be, who won us the World Cup in 2009? Let's get that coach again. That's not how it works. You have to live in the present. You have to see
what other teams are doing, you have to know how you want to keep up with them. That is what you should do. पर हमारी वही मेंटालिटी, अगर इमरान खान भी अवेलेबल होता ना कोचिंग के लिए तो ये उसको भी ले आते. ये इनको फर्क नहीं पड़ता कि आज से 30 साल पहले वो बंदा रेलेवेंट था, आज से 20 साल पहले रेलेवेंट था. दे वांट टू ब्रिंग इन समवन that won a tiny piece of silverware for us anywhere in the world. It doesn't matter. Someone can win the domestic trophy, they'll bring him in just because they want to bring someone in. So you have to keep up with the world. You have to see why teams are doing good and which coach suits that style. That is why teams in the world, they are changing their perspective. Everyone goes hard in the power play. हम कब से ये बात कर रहे हैं कि you need to go hard in the power play. पाकिस्तान आज एक मैच के लिए गया है. Look at the difference. Look at the difference that made to our team. 200 for 1. You would have never expected Pakistan to do that. You need a coach that actually encourages that kind of performance. Not Mickey Arthur stuck in dark ages, really. अगर आप उससे आज पूछोगे कि मतलब आपकी हाईलाइट क्या है, वो वही 2017 की बात करेगा. उससे पूछोगे कैसे जीतना है, वो वही बात करेगा, विकेट बचाओ और आखिर में खेलो. So yeah, I don't think the players have much to do. This team management stuff has to be managed well, and PCB really need to get their stuff right. बिल्कुल, आई थिंक काफ़ी अनप्रोफेशनलिज्म नज़र आई है PCB की तरफ से, एंड होपफुली दिस इश्यूज कैन बी एड्रेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड कप, ताकि हमारी ऑस्ट्रेलिया सीरीज अफेक्ट ना हो और नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप भी अफेक्ट ना हो ज़्यादा. सो इंशाल्लाह लेट्स होप दैट दिस इशू इज सॉर्टेड क्विकली. नाउ लेट्स एज वी कम टू क्लोज, लेट्स जस्ट ट्राई टू प्रिडिक्ट कि क्या होगा अगेंस्ट इंग्लैंड. एज पर द डेटा जो हमने देखा है, if New Zealand wins against Sri Lanka by even just 1 run, that means we have to beat England by 131 runs. And जितना margin से New Zealand जीतेगी, उसी margin को हमें add करना पड़ेगा on top of 130 and beat England by. आप लोगों को क्या लगता है does Pakistan have a chance to qualify for the semi-final against England? हमें बैटिंग करनी चाहिए पहले या बॉलिंग करनी चाहिए? आई थिंक उसका जवाब तो काफ़ी क्लियर है. बट क्या लगता है, चांसेस है सेमीफाइनल के श्रीलंका जीत सकती है या नहीं? व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? भाई मेरी तरफ से तो देखें, सीधी सी बात है, कुदरत का निज़ाम इज वेल एंड ट्रूली ऑन ट्रैक. कुदरत का निज़ाम has been working. It has been working perfectly. 7 out of 7 games, we've got the result that we wanted. We are well and truly on track. We can win this. How does it happen that the one game that we need to either be drawn or we want New Zealand to lose, there happens to be a chance of rain? ये कुदरत का निज़ाम नहीं है तो क्या है? Really, we want New Zealand to lose this game. हमारे लिए वो 190 रन से हारे हैं, हमारे लिए वो हमसे भी हारे हैं. तो obviously they're going to lose to Sri Lanka, inshallah. And all we need to do is beat England. Because if actually New Zealand beats Sri Lanka, I think the situation becomes much harder. I think then the chances are very bleak if New Zealand wins against Sri Lanka. So really, our hopes and prayers have to be directed that Sri Lanka beat New Zealand somehow, because they also want to win. They also want to play the Champions Trophy, so they have something to play for. They can't just put their hands up and leave. तो कुदरत का निज़ाम, हमारा पूरा ईमान, सब कुछ उसी के अंदर है. Really, 1% chance, 99% faith. Inshallah, we'll beat England and Sri Lanka will beat New Zealand. I have full faith and hope that Qudrat Ka Nizam is literally our 12th man. Matlab, as I would say again, who would have thought that South Africa would beat New Zealand by 190 runs? And who would have thought that Pakistan would end up winning a match where the target was 402 runs? It's unbelievable. It has to be some supernatural power. And so far, it's working in our favor. We started off the week with 5 scenarios of ifs and buts. Abhi sirf 2 bache hain. The 2 scenarios left are Sri Lanka has to beat New Zealand, Pakistan has to beat England. If we just follow these 2 matches closely, and if Qudrat Ka Nizam works for us, I think hum qualify kar jayenge. Inshallah, as Essen said, 99% faith, 1% chance. So inshallah we see a heroic performance of Pakistan against England. Anyways, guys, thank you so much for listening. Thank you for joining us, Ozan. I really appreciated your insights. और बहुत मजा आया. And inshallah we'll see you soon. Yes, Ozan, thank you very much for coming. Inshallah, we'll see you very soon. Inshallah, Pakistan will go through and we'll be seeing more of you sometime soon, inshallah. और inshallah हम सबकी दुआ यही है कि Pakistan wins this World Cup and we go through. But thank you very much for joining, and we really enjoyed this podcast with you.